Hello, welcome to you in this today's physics video, which is of electricity. So today we are going to learn it is of about Kirchhoff's laws. As in previously we have discussed, which is regarding to Ohm's law. So we were looking over there. Ohm's law can be used to find out the voltage, current, and resistance of any simple electric circuit. Okay, so there you will have that either they are in series or either the combination is in parallel. So that were connected with the battery, and we have to find in this case current, equivalent resistance, or that voltage potential difference across any resistor. Okay, now over here that if we are taking the complex circuit, so you will find, just check over there this circuit which is given, that I'm having the two cells, one cell it is E2, another it is E1. That E1 is connected with R1 and E2 is connected with R2, and there is R3 finally in this arm. Okay, so over here how to find out this how much is the current in it, or either how much is the equivalent resistance of this circuit. Okay, so it becomes little bit complex because we have used over here and the two cells. Okay, so therefore this complex circuit, how we are going to solve it is with the help of the Kirchhoff's laws. Now another important that you will find, that I'm having a Q. Okay, this is the Q, and this is the opposite edge of the Q. These are the opposite edge. Okay, so every edge or every side of this cube is having the same resistance. So if I'm going to connect this battery between this P and this Q, that edge of the Q, then how much will be the resistance, or how much will be the current due to of this in the circuit. Okay, so therefore with the help of Ohm's law it will become very tough work to find out the answer, but with the help of Kirchhoff's law, that we can give our answer very simply. Okay, so for such a complex circuit, to have the results of their voltages and current and the resistances, we are using the Kirchhoff law. Now this Kirchhoff law actually he has given two laws. Okay, so this is the first, and that next it is over there that of second law. Okay, so there are the two laws which is given by Kirchhoff. Now the first law it is known as that of junction law. Okay, so first law is known as junction law, or either it is also known as law of conservation of charge. Law of conservation of charge, or either it is also known as Kirchhoff current law, or other name which is given to it is Kirchhoff's current law. Okay, so this in the short form you can also write it as KCL, Kirchhoff's current law. Okay, so the different name is given only for this first law, which is junction law, either law of conservation of charge, or either that Kirchhoff's current law. Okay, now let us to learn over here what is this Kirchhoff's first law. Okay, so for this student it is said that let us suppose that here it is a point where the different wires have connected. So I'm having, this is a wire which is having that resistance. Okay, so its end is connected over here. So let this point it is going to be O, and this is another wire which is connected at here. Okay, so let this is the another wire, so it is having R1 resistance, it is having R2 resistance. Here this is another wire which is connected with this point O, so let it be R3. Okay, and there is another which we are supposing, let us to have, this is another wire which is connected with this O point, so this is R4. Okay, so there are so many wires which are connected at this point O.
ओके, सो दिस पॉइंट ओ इट इज सेड टू बी एज जंक्शन। ठीक है, जैसे रोड के ऊपर क्या होता है, एंड जो हमारे पास जैसे एक पोर्शन रोड का ऐसा जहाँ पर बहुत सारे रोड आपस में मिलते हो, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी जंक्शन। ठीक है, या फिर हिंदी में चौराहा जिसको बोला जाता है। ठीक है, जहाँ से चार रास्ते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैसा ही सेम हमारे पास ये क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स हैं, ये क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मीट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया है, जंक्शन बोला गया है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये क्या बनने वाला है, जंक्शन लॉ बनने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो वायर है एक दूसरे के साथ मीट करती हों, वो पॉइंट हमारे पास जंक्शन बनता है। ठीक है, नाउ ओवर हियर वी आर सपोजिंग दैट कि जैसे मान लो ये जो मेरे पास फर्स्ट वायर थी, इसमें से एक करंट जो है वो इस तरह से पास होकर के आता है, लेट इट बी I1 करंट। ठीक है, दूसरी वायर से मेरे पास क्या हो गया, ये I2 करंट जो है वो उस जंक्शन की तरफ आता है। ठीक है, और तीसरी वायर जो हमारे पास है यहाँ से, इससे जो करंट है वो यहाँ पर एंटर मतलब कि उस जंक्शन की तरफ आता है, लेट इट बी I3। मतलब कि I1 I2 I3 कहने का हो गया कि ये जो करंट है ये डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास थर्ड वायर से जो करंट था जंक्शन की तरफ गया वो I3 था। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ वायर से जो करंट है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है वो I4 हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी टू सपोज ओवर है कि एक और वायर यहाँ पर मैंने कनेक्ट की है जंक्शन के साथ। ठीक है, सो इट्स रेजिस्टेंस इज R5। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इससे जो करंट है ना वो जंक्शन से बाहर की तरफ को जा रहा है, सीधा एरो। ठीक है, तो ये जंक्शन से बाहर की तरफ को जा रहा है, सो दिस इज I5। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जस्ट लुक इट विद द एग्जांपल। मतलब कि हमारे पास क्या होता है, जैसे सिटी का या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस का क्या होता है, एक बस स्टैंड होता है। तो उस बस स्टैंड के ऊपर बहुत सारी बसेस आती हैं। तो उन बसेस के अंदर क्या हो रहा है, जो पैसेंजर्स जो है उस बस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो बस स्टैंड पे पहुंचेंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे जंक्शन की बात हो रही है, तो जंक्शन के ऊपर ये जो बहुत सारी बसेस आ रही हैं, यानी कि I1 जो हमारे पास यहाँ पर एक बस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो I1 I2 I3 I4, तो ये क्या कर रहे हैं, उस बस स्टैंड पे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या हो रहा है, एक बस जो है उस बस स्टैंड से बाहर को जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो सारे के सारे पैसेंजर हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो कहाँ से जाएंगे, उस बस से जो उस बस स्टैंड से बाहर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सेम व्हाट इज सेड बाय दिस जंक्शन लॉ कि जो हमारे पास अलजेब्रिक जो जितना भी करंट एंटर करता है उस जंक्शन के ऊपर, ठीक है, करंट एंटरिंग at the junction will be equal to current leaving the junction। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, जितना करंट जो है उस जंक्शन के ऊपर एंटर होता है उतना ही उसको छोड़ के जाएगा, करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम अगर सपोज करें जो मेरे पास जो करंट था जो एंटर कर रहा था जंक्शन के ऊपर, कौन सा करंट एंटर कर रहा था, I1 एंटर कर रहा था, I2 एंटर कर रहा था, I3 एंटर कर रहा था, I4 एंटर कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे करंट एंटर कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास लीव करके कौन जा रहा था, ठीक है, तो लीव करके जा रहा था I5। ठीक है, तो जितना करंट है उस जंक्शन के ऊपर आया उतना ही करंट उसको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी देखें। ठीक है, तो दोनों क्या हुआ, बराबर। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड ले आऊँ, सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, जो अलजेब्रिक सम है ऑल द करंट विच इज एट द जंक्शन। ठीक है,
तो वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब कि जितना करंट एंटर कर रहा था उतना ही करंट उसको छोड़ के चला जाता।